हेलो स्टूडेंट्स, आवाज क्लियर है? एक बार चेक। यस। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो वंस अगेन रियल एकेडमी का यूट्यूब चैनल एंड इन दिस सीरीज लोग स्टार्ट करने वाले आईसीएसई का फिजिक्स सेक्शन। तो आज अपना फर्स्ट वीडियो है आईसीएसई फिजिक्स का, लेकिन डे टू डे लाइफ में जितने भी डेज आएंगे हम लोग फिजिक्स का पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेसिक पढ़ने वाले, बिकॉज विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन टर्म्स ऑफ आईसीएसई बोर्ड एग्जाम। एंड ये चैप्टर का वेटेज कम से कम 7 to 8 है। एंड दिस चैप्टर इज कनेक्टेड विद द हाउसहोल्ड सर्किट आल्सो। दैट मींस दिस चैप्टर विल सपोर्ट द अनदर चैप्टर आल्सो। सो मेक श्योर कि whenever you want to study the current electricity आपको बेसिक से सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इन टुडेज करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बेसिक कंसेप्ट, फॉर्मूला एंड बेसिक एग्जाम्पल जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू टू मच इंपॉर्टेंट है उसको स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। Now, in the current electricity, there are some basic formula जो अपने को पता होनी चाहिए. And what are that basic formula? We'll make a list of formula. The first formula जो current electricity में बहुत important है, that is Ohm's law. And what is Ohm's law? Ohm's law is equal to V is equal to IR. है ना? So V is equal to IR, where if I see where V is equal to potential difference, it is also called as a voltage. So in Ohm's law, V is equal to IR. V stands for potential difference, which is also called as voltage. I stands for current, and R stands for resistance. अगर मुझे इसका यूनिट चेक करना है, if I want to check the unit of each and every term, तो voltage का यूनिट आएगा volt, which is called as V. The unit of current is called as ampere. इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे? That is capital A. And if I say the last one, that is resistance, इसका यूनिट पता है, that is PDF पाठवते ना त्याला, तो नाही का बसून देणार. So one of the most important formula with respect to current electricity is Ohm's law, V is equal to IR. दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. हर एक न्यूमेरिकल में करंट इलेक्ट्रिसिटी के ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन सकता है. So V, I, R with the U. With respect to that, there are some other formula also. One more formula is which is very much important. That is I is equal to Q upon T. कि the current is the rate of flow of charge. जब भी चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूवमेंट करेगा, that movement of charge is called as current. The second most important formula is I is equal to Q upon T. Now what is Q? Where Q is equal to charge flowing through conductor. तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर. तो जो भी मेरे पास मेटालिक कंडक्टर, उससे कितना करंट, इतना चार्ज फ्लो होगा, दैट चार्ज इज Q. एंड द लास्ट वन, दैट इज अ T, स्टैंड्स फॉर टाइम. द यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज कूलम. तो चार्ज का यूनिट क्या आता है? दैट इज कूलम. एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड. इज अ सेकंड. तो चार्ज इज काउंटेड इन टर्म्स ऑफ कूलम. कूलम का आपको याद रखना है, दैट इज कैपिटल C. कूलम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय सेकंड. अपने छोटा s भी लिखा तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम. तो दिस टू फॉर्मूलाज आर मोर इंपॉर्टेंट. बट इसके साथ देयर इज अ वन मोर फॉर्मूला व्हिच इज कनेक्टेड. पहले ये दोनों नोट डाउन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. इफ यू हैव एनी डाउट, चैट बॉक्स इज देयर, देन वी कैन डिस्कस.
So these two formulas are clear. The first one is Ohm's law, V is equal to IR, and the second I is equal to Q upon T. This second formula also clear. आगे बढ़ते हैं. We'll see the next one. What is the next formula, which is very much important with respect to current electricity? That what is a charge? See, in electricity, electrons का flow होता है. The major charge is electron. So there are multiple electrons in the fluid. Count of electrons is too much. कि एक कंडक्टर में हो सकता है millions of electrons हो सकते हैं. So how we can find the charge? That charge is equal to N into E. But what is N? Where N is equal to number of electrons. N is equal to number of electrons, and E is equal to charge on electron. This one is known as charge on electron. And what is the charge of electron? तो ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए. It's a constant value. That charge is minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So this is the value of charge on every electron. That is minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. ये इसका चार्ज है. ठीक है. Again, ये थर्ड फॉर्मूला था. This is the third formula comes under the electricity. The next fourth formula is that is a power. So with respect to power, there are three basic formulas. एक नहीं, जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया, जैसे पावर के मल्टीपल तीन फॉर्मूलास है. The first formula comes with the power is V into I. That is a V into I. ये first formula आएगा. If I use Ohm's law says V is equal to IR ना, तो I can substitute V as I into R. So if I substitute, तो formula क्या बनेगा? That is I square R. So this is also one of the formula. So power का VI, this is the first formula. Second आएगा that is I square R, and third आएगा that is V square upon R. Means as per the given condition, given condition क्या दिया है, with respect to that we can find the power. अगर क्वेश्चन में वोल्टेज एंड करंट दिया है, so we can use VI. क्वेश्चन में करंट एंड रेजिस्टेंस दिया है, तो we can use I square R. अगर क्वेश्चन में V and R दिया है, then we can use V square upon R. So these are the three different formulas of the same quantity called as a power. And power is represented by capital P. And what is the unit of power? The unit of power is equal to watt. उसको watt भी बोलते हैं. So it is represented by capital W. So it is a watt. It is represented by W. Okay. These are the fourth formula, which is very much important with respect to current electricity. आगे बढ़ते हैं. Next formula देखते हैं. That is fifth one. Energy consumed. Energy consumed. Energy consumed is very much simple, which is equal to power into time. It is a power into time. And what is the power? Power is denoted by P. Time is T. Now again, power के तीन फॉर्मूला. पहला V I, second is I square R, third is a V square upon R. तो वापस यहाँ पे तीन फॉर्मूला बनेंगे. That is a V I T. Next one is V square upon R into T, and then I square R into T. These are the three formula belongs to one thing, that is energy. So as per the given quantity, we can use anyone. As per the given quantity, we can use anyone. And what is the unit? The unit of E is equal to joule. It is represented by capital J. तो यूनिट क्या आएगा? That is a capital J. It is stand for joule. कभी कभी याद रखना है कि क्वेश्चन में एनर्जी नहीं पूछेंगे. They will ask you heat. जब मैंने मोबाइल चार्जर को लगाया तो एनर्जी ट्रांसफर हो गया, एनर्जी कंज्यूम हो गया, बट साइमल्टेनियसली देयर इज जनरेशन ऑफ हीट. तो याद रखना है कि एनर्जी कंज्यूम इट इज आल्सो कॉल्ड एज heat generated. It is also called as heat generated. So whenever they ask you what is the value of heat, that time also we can use any formula from this food. So again fifth formula देखिए, and then आगे बढ़ते, that is a combination of resistance. कि we have multiple types of resistance, either in series, either in parallel, जिसका कम से कम एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला.
and we should be ready from our side. क्वेश्चन कैसा भी आने तो अपने को आंसर आएगा. तो इसका विल सी टू more formula based on series and parallel resistors. इतना देखो, आगे बढ़ते. चलो, तो 5 फॉर्मूला हो गए. बेसिक V इज इक्वल टू आई आर देखा, I इज इक्वल टू बाई टी देखा, देन Q इज इक्वल टू एन देखा, पावर इज इक्वल टू 3 फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू 4 फॉर्मूला. ये होने के बाद दिस इज द नेक्स्ट वन, दैट इज द सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस. सो द काउंट ऑफ द फॉर्मूला इज नंबर 6. तो नेक्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. सीरीज combination of registers. क्या आ गया यहाँ पे? So let's consider there are multiple registers connected in series. There are multiple registers connected in series. So let's say it is R1, let's say it is R2, let's say it is R3, let's say it is R4. So whenever the resistance connected one by one, एक के बाजू में एक ऐसे resistance connected होंगे, that condition is called as series combination of resistor. एक के बाजू में एक. So what will be total resistance? Now whenever they are connected in series, the total resistance सबका मिला के एक ताकत बनेगा ना. So total resistance क्या है? That is also called as equivalent resistance. That is also called as equivalent resistance. The formula is very much simple, which is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4. तो जितने भी रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है सबका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एडिशन करो, अपना काम इजी बन जाएगा. सो R1 plus R2 plus R3 plus R4, अपना काम इजी हो गया. यहां तक देखो. देन जाते हैं पैरेलल, बिकॉज सीरीज इतना डिफिकल्ट नहीं, बिकॉज सीरीज सिर्फ एडिशन करना है. पैरेलल इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, बिकॉज वहां पे लॉजिक क्लियरिटी होना चाहिए, वहां पे मैथ्स क्लियर होना चाहिए. तो सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिया, इसके बाद जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड देन विल स्टार्ट सम्स. तो सीरीज का आइडिया क्लियर हो गया. सीरीज बहुत इजी, सीरीज में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं. आगे बढ़ते विल सी द नेक्स्ट वन, दैट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. सेवेंथ एंड लास्ट फॉर्मूला, पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. क्या आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन? सो लेट्स सी कि मेरा पास 3 रेजिस्टेंस है. यू कैन टेक एनी काउंटर, 3 4 5 6, कितना भी काउंट. सो लेट्स से कि वी हैव R1, R2 and R3, and they are connected one by one, not one after one. One after one connected हुआ, so that is series. It is a one by one by one by one. उसके नीचे connected. This combination is known as parallel combination. And what is the total resistance? The total resistance 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, ऐसे है. तो यहाँ पे न्यूमरेटर एडिशन नहीं हुआ, यहाँ पे कौन सा एडिशन हुआ? डिनोमिनेटर एडिशन. सो इट इज 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, ऐसे डिनोमिनेटर एडिशन हुआ.
जब भी हम लोग ये सॉल्व करोगे बाय यूजिंग एलसीएम कंसेप्ट, बेस कॉमन कंसेप्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कंसेप्ट, कौन सा भी मैथमेटिकल मेथड से सॉल्व किया तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर फाइनल नहीं है. दैट आंसर बिलोंग टू 1 बाय आर. दैट आंसर बिलोंग टू 1 बाय आर. अपने को उसका रेसिप्रोकल लेना. लेट्स से कि इसका आंसर आ गया 1 बाय 2. ये सॉल्व किया, आंसर है 1 बाय 2. तो 1 बाय 2 इज नॉट करेक्ट आंसर, इट इज आंसर ऑफ 1 बाय आर. तो इसका रेसिप्रोकल लिया, इसको भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, आंसर आएगा दैट इज 2. सो मेक श्योर कि पैरेलल करते टाइम वी नीड टू प्रीटी श्योर अबाउट कि रेसिप्रोकल वापस लिया है. इसके लिए एक बेसिक शॉर्टकट है, जो शॉर्टकट मैं आपको बोलता हूं. तो व्हाट इज द शॉर्टकट? याद है, देयर इज वन शॉर्टकट दैट वी कैन यूज इन एग्जाम आल्सो. कि वी हैव ओनली टू रेजिस्टेंस, वी हैव ओनली टू रेजिस्टेंस. तो मेरे पास सिर्फ दो रेजिस्टेंस. फर्स्ट वन इज R1 एंड सेकंड इज R2. तो मेरे पास सिर्फ दो रेजिस्टेंस है एंड मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है. दैट टोटल रेजिस्टेंस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. So we can use 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 upon R2. तो सॉल्व करते करते कभी भी कुछ मिस्टेक हो जाएगी. तो फॉर दैट वी हैव वन शॉर्टकट. व्हाट इज द शॉर्टकट? कि ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे एडिशन. इन अ न्यूमरेटर वी कैन डू द मल्टीप्लिकेशन, इन अ डिनोमिनेटर वी कैन डू द एडिशन. तो आंसर क्या आएगा? दैट इज R1 R2 डिवाइड बाय R1 plus R2. So we have R is equal to R1 into R2 divided by R1 plus R2. ये इसका फॉर्मूला बनेगा. So rather than doing this one, इससे भी सॉल्व किया तो भी आंसर आएगा. But whenever we have only two resistance, only two, this is not applicable for three. What we'll do? ऊपर multiply and नीचे addition. This will be a shortcut. ये शॉर्टकट अपने एग्जाम में फॉलो किया तो भी चलेगा, but it is only applicable for two resistors. Only applicable for parallel combination of two resistors. सिर्फ दो रेजिस्टेंस चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं. तो ये कंसेप्ट देख लो, देन उसमें कम से कम दो न्यूमेरिकल हो. इसको देखो, आगे बढ़ते. In between, if you have any doubt, chat box is open. We can discuss. Sure. Now we'll start with a few numerical, which is very much important with respect to concept also and ICSE board point of views. Start करते हैं. And ये chapter not only in ICSE, it is in CBSE, it is in state board, it is in 11, 12, every standard. Current electricity कभी ना कभी आने वाला है, कभी कभी होने वाला. We'll start with the first question. We find the current flowing through circuit. The first question that we need to solve, we find the current flowing through circuit. तो क्या दिया देखो, we'll see the circuit. So this one is a circuit, and from that circuit we need to find how much current is flowing.
So if you see the circuit, in that circuit we have 5 volt ka battery, then there is a key, this is known as a key. You see circuit को on off इतना ही करने वाला है. Then we have two resistors 10 ohm and 20 ohm, they are connected in parallel, दोनों यहाँ पे connected है parallel. So first of all मुझे क्या करना है, करंट दिखाना, मतलब by Ohm's law V is equal to IR. V कितना दिया, V दिया 5 volt. We don't know what is I, but we can find the total resistance R. So once we know the V, once we know the total resistance R, we can find the value of I. कैसे आएगा? So let's solve. तो हमने इसको solve किया, कैसे आएगा? This two are connected in parallel, and जैसे कि दो resistance है, तो we can use a shortcut method. That total R is equal to क्या आएगा? ऊपर multiply, नीचे addition. So we can use that technique. In a numerator there is a multiplication, in a denominator there is a addition. तो क्या आएगा? It is 200 by 30. So 0 0 will get cancelled. आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 20 by 3. No need to solve in point form. उसको बाद में लिखते हैं. Resistance निकालना agenda नहीं. The agenda is to find the current. Now by Ohm's law we know that. By Ohm's law we know that V is equal to IR. So what is I? I is equal to V upon R. V is how much? 5. R is 20 divided by 3. So what will happen? 3 ऊपर जाएगा. It will become 5 into 3 divided by 20. Then what will happen? 5 ones are 5 fours are. So answer will be कितना आएगा? I is equal to 3 by 4. What is the 3 by 4? If I use point form, it's 0.75 ampere. So this will be your answer. So what is the value of current flowing through circuit? 3 by 4 or 0.75 ampere. This is a perfect answer. So make sure कि question easy था. Only we need to know how to find a total resistance. आपने यहाँ पे 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. By using that 1 by 10 plus 1 by 20 ये भी solve किया तो भी आंसर सेम ही आएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं. Based on that मैंने Ohm's law यूज किया, तो एक ही क्वेश्चन में दो फॉर्मूला यूज हुआ, पैरेलल कनेक्शन with the shortcut one and the Ohm's law, and then final answer. So सबको पहला क्वेश्चन समझा कि put a message in a chat box कि first question is a clear and there is no call doubt. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So this lecture series is just starting. हम लोग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में ऐसे लेक्चर्स लेके आएंगे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सो दैट स्टूडेंट्स का नॉलेज लेवल इंक्रीज होगा, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, बेसिक एग्जांपल उनके क्लियर हो जाएंगे, सो दैट दे विल गेट अ मोटिवेशन कि चैप्टर डिफिकल्ट नहीं, चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ, लॉजिक क्लियर हुआ, बेसिक मैथ्स अपने को आता है, तो बाय टेकिंग अ मोटिवेशन लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते. ठीक है, तो ऐसा ही लेक्चर सीरीज आते रहेंगे. जस्ट बी कनेक्टेड विद द रियल एकेडमी का यूट्यूब चैनल, रियल एजुटेनमेंट. सब्सक्राइब टू चैनल सो दैट जो भी नए वीडियो आएंगे आपको वहां पे नोटिफिकेशन आएगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं वन मोर क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस and total current flowing through circuit. तो क्वेश्चन का टाइप में भी सेम होगा, लेकिन क्वेश्चन का डायग्राम थोड़ा सा वेरी होने वाला है. लेट्स सी द डायग्राम. सो डायग्राम देखिए कोई भी भागेगा नहीं, डायग्राम कितना भी डिफिकल्ट होने दो. इलेक्ट्रिसिटी में इफ यू हैव अ लॉजिक, द डायग्राम इज टू सिंपल. सो डायग्राम देख के भागने का नहीं. सो क्या दिया देखो. सो वी हैव 2 ohm, वी हैव 4 ohm. ठीक है, वी हैव 1 ohm, वी हैव 5 ohm, वी हैव 3 volt. So this one is the diagram. In there we have total 4 resistance. Now first we need to find कि V is equal to IR तो यूज होगा.
V दिया 3 वोल्ट, यहाँ पे K दिया, अभी कुछ काम का नहीं बिकॉज स्विच ऑन है, तो सर्किट से करंट पास तो होने वाला. We need to find the total resistance. If you see properly, 2 and 4 are connected in series, and 1 and 5 are connected in series because they are continuous, one by one after one, है ना. So क्या आएगा, 2 and 4 in series and 1 and 5 in series. So I'll write solution here. 2 ohm and a 4 ohm and 1 ohm and a 5 ohm are connected in series. So they are connected in series. So I can write R1 is equal to 2 plus 4, which is equal to 6 ohm, and R2 is equal to 1 plus 5, which is equal to 6 ohm. So 2 plus 4 6, 1 plus 5 6. तो अपने को टोटल रेजिस्टेंस मिलने के लिए R1 मिल गया, R2 मिल गया. ठीक है, यहाँ तक देखिए, दिन आगे बढ़ते. We'll go to the next page and then we'll solve. ठीक है, तो ये आइडिया क्लियर हो गया. तो rather than taking two resistance, we can replace it by 6. अगेन 2 रेजिस्टेंस की जगह पे एक रेजिस्टेंस रिप्लेस कर सकते हैं. कैसे आएगा आंसर? We'll draw one more circuit. This one is a new circuit diagram. यहाँ पे आएगा 6 ohm, यहाँ पे आएगा 6 ohm. This one is 3 volt. है ना? Now we have only two resistance. तो जो चार थे उसके अभी सिर्फ दो आ गए. Now they are connected in parallel. 6 ohm and 6 ohm are connected in parallel. So what is total resistance? ऊपर multiply, नीचे addition. So क्या होगा? 36 divided by 12. 12 ones are 12, 2s are 12, 3s are 36 ना. तो total आज कितना है? That is 3 ohm. So by Ohm's law, क्या आएगा Ohm's law? V is equal to IR. So I is equal to V upon R. Voltage कितना दिया? 3. R कितना दिया? 3. It will get cancelled. Current आएगा I is equal to 1 ampere. This is equal to final answer. Question difficult था क्या? Answer नहीं. Question बिल्कुल difficult नहीं था. Solving आपका clear कब होगा? Once you know the logic, once you know the concept, once you know the formula and basic maths. इतने अपने कुछ ही, बाकी कुछ नहीं. So ऐसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग मेजर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आईसीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. जो भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू में से उसको भी सॉल्व करेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग और डीप पे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन इन डेप्थ सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2025, 24, 23, 22 लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यू पेपर के करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. इट्स अ गारंटी कि लास्ट पेपर्स का एनालिसिस किया तो एक ना एक क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर 3 मार्क के लिए एग्जाम में आने वाला है एज अ न्यूमेरिकल. आउट ऑफ पेपर ऑफ 80 मार्क्स 3 मार्क का सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट. सो मेक श्योर उसके लिए आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, मल्टीपल पेपर सॉल्व करना है. यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर. मेक श्योर रियल एजुटेनमेंट के आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है सो दैट जो भी नए वीडियो आएंगे उसका आपको अपडेट यहाँ पे मिलता रहेगा. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है एंड जो भी आज का कंटेंट हुआ वो अगर सेटिस्फैक्टरी होगा, इफ यू वांट एनी सजेशंस तो कमेंट सेक्शन, लाइव चैट इज देयर. फ्रॉम दैट मुझे कुछ ना कुछ फीडबैक मिलेगा, टीम को फीडबैक मिलेगा, एक पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा सो दैट स्टूडेंट्स विल गेट अ पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम टीचर्स. तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share with your friends. यहाँ पे स्टॉप करते हैं. थैंक यू सो मच. चलो बाय.